For a student hub that's usually bustling at this time of the year, Kota's grades are slipping. Signs like these are unusual, and for those like Naveen Mittal, they're also alarming. This is the first time in decades that the student hub has seen a sharp drop of 30% in the number of students coming in. Kota's annual average student strength was close to 1.4 lakh in 2023. This year, it's down to 85,000. इकोनॉमी हमारी 6-6.5 हज़ार करोड़ की हुआ करती थी, वो सिमट कर 3 से 3.5 हज़ार करोड़ की इकोनॉमी कोटा में रह गई। और कोटा की जो इकोनॉमी है वो पूरी कोचिंग बेस पे चलती है, क्योंकि जितने भी यहाँ के लोग हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रूप से कोटा कोचिंग पे, और जो यहाँ आने वाले जो बच्चे हैं जो प्रतियोगिता की तैयारी करने आते हैं शहर के अंदर, मेडिकल कहूँ या इंजीनियरिंग के लिए जो आते हैं, उनसे है आपका कोटा का रोजगार चलता है। लगभग 70% रोजगार जो है शहर का वो इन बच्चों पे आधारित है। The reason for the sharp drop? The guidelines for registration and regulation of coaching centers 2024 that were implemented in January this year. Under the new guideline, the coaching centers cannot take admission of the students below 16 years of age. The government felt the need to crack down on unregulated coaching centers after Kota saw 20 student suicides last year. Even though students below 16 cannot appear for competitive exams, Kota became synonymous with the intensive prep offered by coaching centers. Students as young as 14 often arrived with a parent in tow, usually 2 years before they were even eligible to sit for competitive exams, sometimes even earlier. कोटा भी इसी से चल रहा है, छोटे बड़े सब, बड़े लोग भी छोटे लोग भी सब बच्चों से ही है। आज बच्चे आएंगे तो कोटा अच्छा रहेगा, बच्चे नहीं आएंगे तो ग्राफ घटेगा भी सही। While the going was good, industry estimates suggest that Kota's coaching centers and the paraphernalia that came with it gave the local economy a 7,000 crore rupee annual boost. और शिफ्ट देती तो पहले तो 10-15 हज़ार रुपये की शिफ्ट मिल जाती थी, अभी 500 रुपये कमाने में बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है हमारे। और इससे स्टूडेंट अगले साल और कम हो जाएंगे तो वापिस दूसरा धंधा देखना पड़ेगा या मजदूरी करना पड़ेगा। पहले स्थिति यहाँ पे तो 2 बच्चे आए हुए हैं, पहले भी स्थिति भीड़ लगी रहती थी बच्चों की। इस बार बच्चे भी नहीं है, बिल्कुल गिनती के बच्चे आ रहे हैं, 1-2 बच्चे आ रहे हैं। तो सरकार की तरफ से ये गाइड लेना है कि 16 साल की उम्र होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसकी वजह से हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ कम हुई, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, बच्चों को ये बताया गया कि सुसाइडल सिटी है और इसमें नहीं जाने के, दूसरा डर के हमारे बच्चे कुछ स्ट्रेंथ कम हुई। तीसरा सबसे बड़ा ये हुआ कि हमारे जितने भी जो प्लेयर्स थे यहाँ के, उन्होंने भी थोड़ी सी कोटा के साथ गड़बड़ की। उन्होंने अलग अलग अपनी ब्रांचेज खोल दी जगह जगह जा करके, और लोगों से एक तरह से फ्रेंचाइजी दे दी गई। अब जो कि बिहार का बच्चा यहाँ चल के आता है, उसको फ्रेंचाइजी वहीं आधे पैसे उसको मिल जाते हैं, तो नेचुरली बच्चा वहीं ठहरेगा। Kota surged as a student destination for competitive exam prep for years. But student suicides, the burden of unrealistic expectations, and the constant pressure to excel took its toll too. The setback that Kota is seeing today is a combination of many factors. Students choosing to stay at home instead of moving cities, competition from other emerging hubs like Sikar and Jaipur, and the opening up of online exam prep options have added to Kota's slide. The change in coaching center regulations has only accelerated a decline that was already set in motion. For our next story, we travel to Haryana, where farmers often get blamed for adding to Delhi's pollution levels, but are now doing something no one could have believed was possible just a few years ago. कई साल से नहीं जला रहे जी हम पराली, हम ना सुपर सीडर मिल रहा जी, सारी पराली हम खेत के अंदर ही उसना इससे पराली को उसमें करते हैं, दबाते हैं जी। मुझे एक चीज़ मिल रही है कि मैं इसको उठा दूं, तो मैं इसमें आग क्यों लगाऊंगा, जबकि मेरा चालान भी कटेगा, FIR भी दर्ज होगी और मुझे बिना बात के किसी का बात भी सुनना पड़ेगा। It's the first time in years that Deepak Malik has not burnt crop residue on his 100-acre field to get it ready for sowing. These numbers show that Haryana has turned a corner on farm fires, registering a drop in all these agricultural districts. This year, between September 15 and November 25, recorded farm fires in Haryana were 42% lower than that for the same time frame last year.
Compare that number to 6,955 farm fires recorded in 2021, and it paints a clear picture of how much has changed. And it's machines like these and a 50% subsidy from the government that have helped those like him make the shift. Malik has 2 straw balers and 1 super seeder machine. अगर मशीनरी और ज़्यादा हो जाए तो 1 भी एकड़ में आग नहीं लगेगी, सिंगल एकड़ में भी आग नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि किसान आग लगाना चाहता है और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ये जो ऑफिसर्स हैं वो आग लगवाना चाहते हैं, नहीं। मशीनरी कम है, विंडो छोटा है, उसके अंदर मशीन्स ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए। The baler helps gather the straw from the leftover stubble and make bundles that can be sold to power plants to make pellets like these used to generate electricity. The super seeder helps mix the leftover stubble into the soil, tills the land and sows the wheat all at once. Farmers who have used the super seeder have seen a drop in their fertilizer use as well. तो सुपर सीडर लिया था मैंने लगभग 4 साल पहले। तो सुपर सीडर के साथ जो भी पुराड़ है वो सारा मिक्स किया, तो इसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है मेरे को। जैसे मैन पावर कम हो रही है तो बिजाई टाइम से हो रही है, तो काफ़ी बेनिफिट है इसके। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ही है, सरकार भी इसके ऊपर सपोर्ट कर रही है। सरकार 1000 रुपया पर एकड़ दे रही है फार्मर को। पिछले साल हमने लगभग 20,000 फार्मर्स को 17 करोड़ रुपए बांटे। But there is more ground to cover. It's true, the availability of balers and super seeders have improved stubble management. Farmers want the government to continue with the subsidies and ensure better transport support to get the heaps of straw sent to factories in time. गेयर करना पड़ा जी, बहुत महंगा पड़ा। वो तो मान लो 120-30 रुपये लेवा, 100 रुपये लेबर के लग जाऊँ उसमें वहाँ लग ले जाने के लिए। उसके बीच बाद में मतलब तागे का भी खर्चा, तेल का भी आ जी, ड्राइवरों का भी आ, बहुत खर्चा है जी उसमें। मतलब लेने वाले नहीं आ जी, लेने वाले कम आ। The success of these machines has given the government confidence that the plan to fight farm fires is working, ensuring continued support to farmers with machines and incentives and building better linkages with factories that process the straw could take Haryana closer to the goal of being farm fire free. From a story of hope to one of despair. When a woman hired an ambulance to take her seriously unwell husband home, she had no idea just how traumatic the journey would be. The story has distressing details that some viewers may find triggering. It was a 270-kilometer journey from Lucknow to her home in Siddharthnagar in Uttar Pradesh. In the ambulance with her was her brother and her unwell husband, breathing with the help of an oxygen cylinder. She had no idea the journey would shatter her trust in humanity. वह 1-2 दिन के अंदर में 1.5 लाख रुपया लग चुका है, बाकी कुछ है नॉर्मल ना आए ना कुछ फायदा भइल। तो हम बोलने का हमें घर पर लेके चलो, तो ही नाते हैं हम घर ही लेके आवता ले। Even though their first preference was to go to a government hospital, there were no beds available. She had to turn to a private hospital for expensive treatment, and for that she had to mortgage a piece of her land in the village. Even after 24 hours, there was no improvement in her husband's condition, and that's when she decided she would take him back home to the village, 300 kilometers away. She started for Siddharthnagar with her husband on a stretcher, breathing with the help of an oxygen cylinder. Her brother sat with her in the back of the ambulance next to her husband. For close to 90 minutes, the ambulance kept taking rounds of Lucknow city. It was close to 10 p.m. when they reached Faizabad, where the driver and ambulance helper loaded up on fuel and alcohol. A casual suggestion by the driver seemed harmless at first. Unknown to her, things were about to take a turn for the worse. तेल भराई के कुछ कदम में आगे जाके बोला पाते हैं बाबू से हमरे के बोला गार्जियन के जरूरी बा। दीदी अपने बोला कि आगे आवे, मैं आगे जाके पुलिस से चिकन करी और पकड़ ले, तो हमन के दिक्कत में हो जाए। तब बाबू बोला हमार की दीदी बैठ जा, तब बैठ ली। Sandwiched in between the two men reeking of alcohol, with her immobilized husband lying in the back, the two men started molesting her. They took away her phone. Her screams were muffled through the glass partition.
फिर आइला अपन छेड़खानी करे लगले। तब फिर हम काची मेरवा रहा कि बाबू न बतिया हम सुन पाई न बाबू हमार बतिया सुन पावे। तो ज्यादा जब दिक्कत करे लगला तो हम कचवा अंगूठी पहनला, अंगूठिया से कचवा पीटली, काली बाबू हमें हमसे बचावा, हमसे निकारा, हमने निकारा हमसे। When they finally stopped the ambulance, it was to make her suffer. The ambulance driver and cleaner were so upset that she had fought back that they threw her husband out of the ambulance, yanked out his oxygen supply, stole 10,000 rupees from her, and even took away her Mangalsutra. ऑक्सीजन निकाल के पैर पकड़ के तुरंत छोटी छावनी के पास ही ठूबा वहाँ से घर वर नाइबा वहीं ला के जंगल जैसे ताबा वहीं उतार फेंक दे रहे। Her brother was overpowered and locked inside the ambulance cabin with her. From there, he dialed the police and 108 to call for another ambulance. Both the police and an ambulance arrived on the scene. The ambulance brought her husband, by now gasping for breath, to the district hospital. But his condition was too serious for a district hospital to handle the case. He was sent to Gorakhpur, where he was declared dead on arrival. To add insult to injury, she was made to run from one police station to the next to file an FIR against her assaulters. The two accused were eventually arrested and are currently in jail.